अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज लेक्चर 3 क्लास 12th खतर यथ मज डिस्कस करो कूलोम्ब्स लॉ। कूलोम्ब्स लॉ दिवान जनरली यूज गसान टू कैलकुलेट फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। बट जनरली वनकस एक्सप्रेशन कूलोम्ब्स लॉ खतर डिराइव करो या डिस्कस करो सो एक्सप्रेशन गछि यूज पॉइंट चार्ज खतर। पॉइंट चार्ज कुस चार्ज गो अस कथ वनो पॉइंट चार्ज। दोस्तों पॉइंट चार्ज मीन्स दैट इज अगर डिस्कस करो दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन्स यमन वनो पॉइंट चार्जेस। अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कम से कम चार्ज दैट इज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, थोड़ा बहुत अलावे गोमुत आयन्स यमन वनो पॉइंट चार्जेस। यमन ते वनो पॉइंट चार्जेस। ब्याक डेफिनेशन या ब्याक किस्म पॉइंट चार्जन सह कुस किस्म यत वन चार्जेस। अगर बॉडी पे वो चार्ज कुछ बॉडी पे वो चार्ज अगर वो जनरली वो इफ this distance between charges is large as compared to their size। अगर distance between charges आसे वारिया ज्यादा यथ मज चार्ज यूज वो वनो यह पॉइंट चार्ज एज लाइक इलेक्ट्रॉन, यह चार्ज एज लाइक प्रोटॉन या यह सह चार्ज आयनस पे आयनजन पे बल्कि यह चार्ज यथनस आसान बॉडीजन पे एक्सटेंडेड बॉडीज अगर तो 11th मज पोर्मुत। But अगर distance between charges is very large, if the distance between bodies is अगर बॉडियन दरमियान जिमन बॉडियन पे चार्ज तिमन is distance of separation तिम यीत दूर जे यून साइज यह वारिया कम as compared to the distance of separation। अम साथ ते हको यमन पॉइंट चार्जेस हको यम कंसिडर पॉइंट चार्जेस कर। फॉर एग्जांपल अगर बह दप अगर अर्थ तो सन निमो अर्थ सन एग्जांपल दिमा अर्थ सन अगर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इट इज वेरी लार्ज यह ज्यादा एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ सन। अतन कंसिडर करान सन और अर्थ एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या दोन दरमियान लार्ज डिस्टेंस इथे कन तुन अगर अस निश बॉडीज तिमन पे चार्ज मगर यम बॉडीज दूर एज कंपेयर टू देयर साइज तिमन तको पॉइंट चार्जेस वनित पॉइंट चार्जेस। तो बुकन मज जनरली वुचमुत तिमो लिखमुत जनरली कूलोम्ब्स लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स फॉर पॉइंट चार्जेस। बट यह स्टेटमेंट सही कह वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस यह पॉइंट चार्जन खुद वैलिड कह बल्कि डिफरेंट एक्सप्रेशन यूज गस वनकन एक्सप्रेशन करो डिराइव यह एक्सप्रेशन तुम बूजम एक्सप्रेशन एफ इज के Q1 Q2 by R स्क्वायर यह एक्सप्रेशन ओबियसली पॉइंट चार्जन खुद अमुक मतलब गो नो बदलन कुछ चार्जन पे अप्लाई कर कूलोम्ब्स लॉ ना इस कथ कह हको प्रेथ कुछ जाए कूलोम्ब्स लॉ यूज कर क्लियर मगर एक्सप्रेशन सह थोड़ा बहुत डिफरेंट ब्रोह कन करो डिस्कस। बट ये वनकस सिंपली वन
تِم bodies یِمن ہُنٛد size واریاہ کم آسہِ as compared to their distance of separation. تِمن خٲطرٕ آسہِ ڈسکس کرُن coulombs law. Clear? دوٚیِم چیٖز یُس تۄہہِ اَتھ منٛز یاد چھُ تھاوُن یُس امیُک سٹیٹمنٹ چھُ سٹیٹمنٹس منٛز أسۍ لیکھو ییٚتٮ۪ن سٹیٹمنٹ تَمہِ پتہٕ وَنہٕ بہٕ تَتھ منٛز کیاہ کیاہ پویِنٹ چھُ تۄہہِ یاد تھاوُن. امیُک سٹیٹمنٹ یُس چھُ coulombs law سٹیٹمنٹ let us suppose اَسہِ نِش چھِ زٕ چارجز Q1 and Q2 زٕ چارجز چھِ اَسہِ نِش اکھ چھُ Q1 بیاکھ چھُ Q2 یِم چھِ at a distance of r from each other and are either Q1 and Q2 are electron and a proton or electrons or these elementary particles or Q1 and Q2 are large bodies but the size یُس یِمن ہُنٛد size چھُ سُہ چھُ واریاہ کم as compared to this r. یہِ چھُ تھاوُن اَتھ منٛز یاد. وۄنۍ کیاہ چھُ اَتھ منٛز سٹیٹمنٹ یُس أسۍ coulomb چارلز کوٗلمبن دیُت کلیر سُہ چھُ وَنان أسۍ the magnitude of force وار تھاوُن جان magnitude of force magnitude of أسۍ وَنو ییٚتٮ۪ن force نہٕ کیٚنٛہہ أسۍ وَنو mutual force between any two point charges is first directly proportional to the magnitudes of the charges that is F is directly proportional to Q1 Q2 وٕچھِو دوستو مےٚ ووٚن magnitudes of mutual force ییٚتٮ۪ن چھِ أسۍ magnitude کران calculate forceُک خٲلی magnitude directionٕچ کتھ چھِنہٕ أسۍ ییٚتٮ۪ن کران فِلحال کِہینۍ تہِ کیاہ چھُ آسان سُہ is directly proportional سُہ کتھ proportional چھُ آسان magnitude of the charges directly proportional to product of the magnitudes of charges یعنی کہِ یِمن دۄن ہُنٛد product چھُ آسان سُہ تَمیُک magnitude چھُ نہٕ productُک magnitude چھُ نہٕ that is directly proportionality چھِ. Second, inversely proportional to square of distance between them. That is, F is inversely proportional to R square. کیازکہِ مےٚ چھُ گۄڈے ووٚنمُت یِمن دۄن درمیان یۄس ڈِسٹنس چھِ سۄ چھِ R. بیاکھ اکھ چیٖز چھُ ییٚتٮ۪ن تھاوُن یاد یۄس یہِ ڈِسٹنس چھِ آسان R ڈِسٹنس جنرلی چھِ أسۍ وَنان یہِ چھِ آسان سینٹر ٹُو سینٹر ڈِسٹنس بٹ أکِس پویِنٹس چھِنہٕ أسۍ سینٹر ڈِفاین کران أکِس پویِنٹس خٲطرٕ گژھِ نہٕ سینٹر ڈِفاین کِہینۍ تہِ کلیر یہِ چھِ جنرل ڈِسٹنس فرام Q1 Q2 سینٹر ٹُو سینٹر اگر أسۍ وَنو سینٹر پٮ۪ٹھ چھِ یہِ ڈِسٹنس امیُک مطلب گوٚو سینٹر پٮ۪ٹھ اینڈس تام چھِ کینٛہہ ڈِسٹنس اتھ پویِنٹس چھُ ریڈیس اگر اتھ ریڈیس بنیو یہِ بنیو نہٕ تیٚلہِ پویِنٹ یتھ چیٖزس ریڈیس بنہِ سُہ بنہِ سٔرکل یا سُفیر یہِ بنہِ نہٕ پویِنٹ پتہٕ کِہینۍ تہِ وارٕ تھاوُن جان یہِ چھُ واریاہ لۄکُٹ اتھ چھُنہٕ أسۍ جنرلی ریڈیس ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ زیٖرو تہِ چھُ so inversely proportional to square of the distance between them that is this ترٛیٚیِم پویِنٹ یتھ منٛز important point تھاوُن یاد یہِ اوس نہٕ ییٚتٮ۪ن ڈِسکس کرُن اَسہِ کینٛہہ بلکہِ یہِ چھُ یِوان جنرلی ویکٹرس منٛز ڈِسکس کرنہٕ بٹ ییٚتٮ۪ن چھُ ضروٗری تھاوُن یاد کیازکہِ یہِ سمجھاو بہٕ یتھ پویِنٹس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تہِ ییٚتھنس اَسہِ یہِ پویِنٹ ضوٚرتھ یہِ لگہِ اَسہِ بیٚیہِ تہِ ییٚتھنس ضوٚرتھ یہِ کیاہ چھُ that is directing
along the line joining the point charges. Joining the point charges. Directing along the line, joining the point charges. This is what I want. Yes, line yath mandan chi Q1 Q2 but is a straight line chi. Ye force apari directing means apari exist gasan, experience gasan. Clear? Yem satan isi combine karo. First to the second. As kya mele thanas? F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square. F is directly proportional to Q1 Q2 by R square. Or we can write F is equal to some constant K Q1 Q2 divided by R square. K is constant. क्योंकि इतना directly proportionality या proportionality sinus इसलिए कि constant आप सितन add. Constant is you constant I think that constantus क्या चीज now दिवान that is Coulomb's constant. Where F is equal to K Q1 Q2 divided by R square. Where K is equal to Coulomb's constant. या वनो इसे electrostatic constant. Electrostatic constant. It can is gravitational loss much gravitational constant bananas. Is that as G capital G. Actually, gravitational constant. You can see the bananas electrostatic constant. Yachat bananas generally electric force constant. Back cheese at onitness, you see F itness, action petkin sign dun arrow chana trawn petkin, sign logo arrow chana trawn petkin. Yeh question is still scalar form. Should vector form as much sirif magnitude is cut karan. But in direction is cut karan. Clear? So F is K Q1 Q2 by R square. Where K is Coulomb's constant, electrostatic constant, and electric force constant. You see K. K. It is I'm brought ये बोना अतकुता value ची SI systems में K ची depend करान दोन चीज़न पे K इस value ची निवान generally 9 into 10 to the power 9 that is SI system value plus दयम चीज़ vacuum में चुसु value वो ये दोन चीज़न पे depend करान first आगो system of unit employed. Yath mazan ku system of unit go employ. Second, that is nature of medium. Nature of medium. Use case value that is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square coulomb minus 2. This value. This value in vacuum. In vacuum or air. Vacuum as medium. Yes, air medium. That must be most 9 into 10 to the power 9 Newton meter square coulomb minus 2. Yemek unit kaita. Unit Newton R square that is meter square Q1 Q2 gets divide if I or even coulomb minus 2. क्योंकि when one में charges क्या unit so करो इस unit
Coulomb's law path discuss. Yeah, 8th month gets to discuss. K is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square Coulomb minus 2. ये कथ मज वैक्यूम या एयर प्लस मज यूज गोमुत SI सिस्टम कौस सिस्टम SI सिस्टम युस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यथ मज बुक जनरली यथ मज हायर बुक सो इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तथ मज ब्रोट SI सिस्टम ब्रोट गॉसियन सिस्टम तत बुझमुत गॉसियन सिस्टम अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट गॉसियन सिस्टम मज केस वैल्यू 1 केस वैल्यू या लॉरेंटिस सिस्टम ब्याक लॉरेंटिस सिस्टम मज वैल्यू 1/4 पाई युस SI सिस्टम यथ मज वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यह कमिक वैल्यू के तो यह सॉल्व कर 9 into 10 to the power 9 Newton meter square and Coulomb minus 2. यह मजा ब्याक चीज that is nature of the medium. यह चीज हावन nature of the medium. The nature of the medium inverse proportionality. यूत ज्यादा तूत k वैल्यू कम यूत कम but as तोह पाई epsilon naught is generally used for यह कमिस खतर यूज गसान वैक्यूमस खतर तो अमिक वैल्यू दैट इज 8.85 into 10 to the power minus 12 केस यम यूनिट्स तिमाय मगर इनवर्सस मज क्या अगर बह एप्सिलॉन नॉट अमिस केस निश खान के वस बोन क्लियर पत यम केस यूनिट्स 4 पाई 1/4 पाई यूनिटलेस केस यूनिट खसन हेर मीन्स यम गसन Reciprocal means Newton minus 1 meter minus 2 Coulomb power 2. ये means units. कमिस चीज़ units that is epsilon naught. तो ये सारी खुद minimum value epsilon naught. इन्हें permittivity शेत वनान absolute permittivity of the medium. ये करो इस अलग lectures में full discuss ये absolute permittivity of a medium go क्या clear? So F अगर इन जनरल रिप्रेजेंटेशन दिमो कमिस खतर Coulomb's laws खतर that is magnitude of the force खतर magnitude of the force क्या बने F equals 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. येतन पे में ब्याक चीज याद इसमें वुन वार ध्यान दिन इथनस मैं वन that यस R distance which is a कथ याद इथनस अख कथ के याद थवन that is युस F इथनस यह magnitude of force क्या चीज magnitude of force Q1 Q2 युस इथनस it is magnitude of charges Q1, Q2 अत मज क्या magnitude of charges magnitude means अगर अस निशन का minus Q1 amount of charges या Q amount of charge यह positive न्यून that is Q number positive sign इसलिए कह बुक्स modulus function use करान इनके modulus त्रावन that is यह बना positive clear second thing is most important thing सो क्या यह R is distance between charges. Distance between charges. What hunda? Q1, Q2 point charges. Q1, Q2 point charges. मैं वन point charges निशन z types गो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयन्स तिम चीज या वनो पॉइंटुक मतलब गो रेडियस जीरो रेडियस यह हेको which tends to 0 वारिया small radius so r is the distance between charges तो पाने assume कर रेडियस
औसत यूत अत गस आसन रेडियस क्या पत सहन त ऐड कर ना सो ऐड करने जरूरत कहें थी सेकंड पॉइंट इस याद थोन यतनस इस मे ओतन ताम थोन दैट अगर डिस्टेंस आसि वारिया ज्यादा एज कंपेयर्ड टू साइज तम साथ यस आर छु यह सेंटर टू सेंटर तेल न्यू क्लियर डिस्टेंस ज्यादा बट रेडियस तम साथ यम साथ ऑब्जेक्टन पे चार्ज ऑब्जेक्टस कह रेडियस तम साथ सेंटर पे सेंटर डिस्टेंस नी लेट अस सपोज अस निश जो ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए ब्याक ऑब्जेक्ट बी यह जरूरी वो हमेशा स्फेरिकल शेप समझाने खतर वो दिम एग्जांपल ठीक है वार थी ध्यान ये पे सिमेट्री चार्जेस सिमेट्री मीन्स क्या गो प्रेथ कुन वॉल्यूम एलिमेंटस मज इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेथ कुन वॉल्यूम एलिमेंटस मज इक्वल योर ती सोई कंडीशन प्रेथ कुन वॉल्यूम एलिमेंटस अस निशन बने जो ऑब्जेक्ट यम मे निश जो ऑब्जेक्ट क्लियर इन डिस्टेंस वारिया ज्यादा एज कंपेयर टू देयर साइज ये वीडियोस मज हेक बह हाथ कह बट फिलहाल करो तुम एज्यूम जी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन वारिया ज्यादा क्लियर अम पे अमिस ऑब्जेक्टस निश इस ऑब्जेक्ट यतनस ये ऑब्जेक्टस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ इक्वल यूत चार्ज अकिस सेंटीमीटरस यथस तूत अमाउंट ऑफ चार्ज अकिस सेंटीमीटरस यतन तूत अमाउंट ऑफ चार्ज अकिस सेंटीमीटरस यतन तूत अमाउंट ऑफ चार्ज सेम कंडीशन यथ खतर प्रेथ कुन यूनिट लेंथ पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज तम साथ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज दैट इज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर क्या चार्ज सेंटर यम किस ज्योमेट्रिकल सेंटरस पे चार्ज सेंटर यम किस ज्योमेट्रिकल सेंटरस पे बट अगर वन चार्ज सिमेट्रिक कहें लेट अस सपोज यह सेंटर यम साइड चार्ज कम यम साइड चार्ज ज्यादा तुम वुचान यम साइड चार्ज ज्यादा यम साइड चार्ज कम बाय एनी प्रोसेस यम साथ ब्रोट कन पर कुछ बॉडी चार्ज दिमो यह सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मज गसान एडजस्ट बेहवान सिमेट्री मज फिलहाल अगर ना सो कंडीशन तेल क्या कर तेल यह डिस्टेंस आर डिस्टेंस गि डिफाइन बल्कि आर डिस्टेंस थोड़ा बहुत गुन क्या ये चार्ज सेंटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या हेको सेंटर ऑफ मास ऑफ द चार्ज अस बॉडी सेंटर वुचन क्या बल्कि वुचन चार्ज सेंटर सो पॉइंट नुन ये पॉइंटस पे बास सोरे चार्ज कंसंट्रेट गुमत क्लियर सो डिस्टेंस कंसिडर कर डिस्टेंस दैट इज आर क्लियर यह पॉइंट इतनस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या यह पॉइंट जनरली समझ कहें बे थो याद सो एफ इज के Q1 Q2 by r square और एफ इज 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square Q1 Q2 it is the magnitude of charges and what is r square it is the distance yes me won equals distance clear the basic point is shet coulombs last pet tim karo base lecture maz discuss not when board lecture